students, we are back again with some more information and some more material to you for the more clarification about the principle of management. As we discussed in earlier lecture that we will talk about the role of managers and the difference between management and administration in the next lecture, we come with that. So, what is the role of managers? Managers कौन है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मैनेजर कौन है. Manager is a person who thinks, who getting the things better way from the others, जो औरों से चीजों को अच्छे तरीके से करवा पाता है. उसको खुद तो आता ही है बट वो औरों से और अच्छे से उस चीज को करवा पा सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट इज एन आर्ट टू गेटिंग थिंग्स विद others in a better way. So what is the role of main roles of managers? That is, first one is the figurehead role. सबसे ऊपर होता है, वो सारी टीम्स का हेड करता है, सब चीजें देखना है. द लीडर रोल, ही लीड द टीम. द लाइजन रोल, ही द लाइसेंस रोल्स रिप्रेजेंट्स रोल्स. द डिसमेनिटर रोल, spokesperson role, he has to speak, he has to present themselves or their team in front of the organization or the entrepreneur or anybody else. The entrepreneurial role, the disturbance handler roles, कोई भी dispute आता है, कोई भी मिस हैपनिंग आती है, कोई भी क्राइसिस आता है, तो उसको हैंडल करना ही पड़ेगा. दैट इज दैट टाइम ही कैन प्ले, he has to play the role of as a disturbance handler role, the resource allocator role, and the negotiator role. Now, productivity, effectiveness, and efficiency. These are the three main key role of the managers, which a manager has to perform accordingly. In productivity, the output input ratio within a time period with due consideration for quality. The manager has to present themselves, has to produce the output in output input ratio within a time period with due consideration for a quality. जो भी quality उनसे मांगा गया है, जितना भी time period उनको दिया गया है, he or she as a manager has to perform accordingly, और उन चीजों को consider करते हुए उसको काम करना पड़ता है. Effectiveness, the achievement of objective. Effectiveness क्या है कि ऐसा नहीं कि objective achieve करने की जल्दी है. The work should be effective too and efficiently, है ना. एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस में बहुत छोटा सा फर्क होता है. एफिशिएंटली क्या है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से सजा वजा के कोई काम कर दिया है, और इफेक्टिव क्या है, अच्छे से भी किया है और उतना ही ज्यादा वो इम्प्रेसिव भी है, उतना ही ज्यादा वो यूजफुल भी है, उसके चीजें सारी रिसोर्स यूज की गई हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ इफेक्टिवनेस. नाउ, मैनेजमेंट स्किल. A manager should be skilled with a technical skill, human skill, conceptual skill, analytical skills, which is a decision making. Analytical skill means what is good for organization, what is good for employee, what is not. He or she has to capable to analyze these types of things or thoughts or the conditions and then take the decisions. So decision making is a key role of the manager. Administrative skills, to manage their team, he has to be skilled with the administrative power. Computer skills, he needs to be skilled. जैसे आपको पता है आजकल बिना कंप्यूटर के कुछ भी नहीं होगा. अभी हम लोग भी हैं, वर्चुअल क्लासेस में चल रहे हैं, तो कंप्यूटर स्किल्स मस्ट बी देयर. कम्युनिकेशन स्किल, as much as the communication is clear and good of a manager's, it is very much add-on quality or add-on skills or add-on progressive manner skills of his or her quality of life and quality of work too. Now, what is the objective of management, or what is objective as purpose? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को, मैक्सिमम यूज करना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, better quality goods, ensuring regular supply of good, discipline and morale, mobilizing best talent, promotion of research and development, minimize the element of risk, improving performance and planning for the futures. Now,
we are coming on the point that is a level of management. कितने level होते हैं किसी भी organization में? There are only 3 levels. First one is top level management. In this, chief operating officer, COO, Chief Executive Officer, CEO, Managing Director, and the Chairman. And the in middle level, Human Resource, Production Manager, Marketing Manager, and Finance Manager. Any organization has 3 types of department, that is a Human Resource Department, Production Department, Marketing Department, and Financial Department. All 3 resources managers called as a middle level management includes. Low level management, foreman, supervisor, and inspectors. Now, what is the difference between management and administration? It is very much clear that administration क्या होता है? Administration में ruling होता है ना? Management में भी ruling होता है, but there is a little bit different. जब आप मैनेजमेंट करते हैं किसी चीज का तो यू हैव टू बी लिटिल पोलाइट, नॉट इन एडमिनिस्ट्रेशन. आपको एडमिनिस्ट्रेशन में उतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है. सो इन फर्स्ट इट इज मैनेजमेंट कंसर्न्ड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, while administration concerned with the policy making. It determines the goals or to achieve. एडमिनिस्ट्रेशन बताता है कि ये पॉलिसी है और आपको ये गोल अचीव करना है, और मैनेजमेंट क्या करता है? उन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन कराता है. इन मैनेजमेंट इट इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, while administration is not directly concerned with the complementations of the policies. वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है. It is related to middle and lower level management. It relates to apex और top level management. Administration का काम केवल middle management और top level से होगा, lower से नहीं होगा, while management related with to the all 3 levels of management. In management, it is mostly used in a private sector, while administration, it is mostly used in a public sector. So I hope that it is clear that the difference between the administration and the management. Now, management is about getting things other done. Leadership is about achieving goals by creating a direction for a business and inspiring employees to take initiative and make the right decision. Elaborate price managers needs the skills to motivate, lead and influence others. Lead to influence things other. So we can say this कि मैनेजमेंट एक आर्ट है दूसरों से काम करवाने का. मैनेजमेंट एक साइंस है किसी भी नई चीज़ों को लिमिटेड रिसोर्सेस में कैसे काम किया जाए. मैनेजमेंट एक लीडरशिप है अपने गोल्स को अचीव करने का. मैनेजमेंट एक इंस्पायरिंग मोटिवेशनल फैक्टर है जो अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करता है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए. So management plays a very important and vital role in a today's scenario and business world. Thank you. Thank you so much. Hope you all are very much aware and very much clear about the role of managers now. All the best.